Okay. So today's chapter, it is related to electromagnetic induction. Okay. So to start with, we will start with the basic definition of magnetic flux. What do you mean magnetic flux? You know there is a magnet. Yes or no? When we study about magnetic chapter, then we will understand. There are two poles of the magnet, North Pole and South Pole. Yes. So this is basically a bar magnet. Okay. There are two poles. Every magnet will have a two pole. One is North Pole, one is South Pole. So there will be some kind of, these are called magnetic field lines. What they are called? Magnetic field lines. Okay. They will start from north. They will end in south. Clear? They will start from north. They will end in south. And they are like this. So each line is a magnetic line. But if this magnetic line passes through in a bunch, then we say this as magnetic flux. Clear? Is it clear? Sorry, can you explain magnetic flux again? Magnetic flux is the total number of lines, write down, total number of magnetic lines passing through an area, placed in a magnetic field. Total number of magnetic lines passing through an area placed in a magnetic field. And this is called magnetic flux. It can be either perpendicular or it can be like this in an angle. Means if I place like this, if I place a plate like this, paper, okay, it can be straight 90 degree or it can be in an angle, anything it can be. Clear? And we normally write like this, B. Why B? B is called magnetic field. B stands for magnetic field. Clear? Okay. So if I say, what is the net flux passing through a surface? The magnetic flux is written like phi. Phi is equal to integration of B dot dA. What is B dot dA? dA is the small value, is the small area along which this B vector is going. So if you want to find out the total magnetic flux in the area, then we integrate B dot dA. Okay. And that becomes what? dA cos theta. This is the formula for magnetic field. Clear? So why do we use cos theta? Dot product beta. This is a dot product. Okay. Got it. B dot A dot B. A dot B. A and B are two vectors. It is AB cos theta. When you do dot product of two vectors, we get what? A scalar. Whenever you do cross product of two vectors, you get a vector. Another vector. A cross B equal to C. And A B, it will sin theta. Clear? Whenever you do cross product of two vectors, you will get sin theta. Whenever you do cross product of dot product of two vectors, you will get cos theta. Clear? Now, Yes, okay. theta is 0. Then what will happen? Theta is 0 means what? The magnetic field lines No change in. are going like this along the plane. That means that the magnetic lines are not passing through the surface. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. I have a plate. I have a paper. Okay. This is theta equal to 90. This is theta equal to some value. Okay. But here I have a paper where theta is like this. Along, like you take a mat and keep some sticks on it. Now, if this is along the plane, the theta will be 0. Here, either theta will be 90 or theta will be
Some 30. Clear or not? Yes, sir. Huh? Yes, sir. If theta is 90, then what will happen? What will be flux? Flux will be BA cos theta. What will be flux? 0. Understood? Yes, sir. Because cos 90 is 0. If theta is 0, then what will be flux? It will be BA. Yes or no? And what is this angle theta? This angle theta is the angle between the magnetic vector and the what? Area vector. Area vector. Area vector is always along the plane. Yes or no? And the magnetic vector is like this. Clear? Yes, sir. So what is theta? Theta is the angle between the magnetic Yes, field sir. vector and the area vector. Clear? And sir, theta cannot be more than 90, right? Because the angle will come negative. Theta cannot be more than 90, you are saying? Yeah, because the angle will come negative, right? Yeah, angle will come negative, and then that time your magnetic field will reverse the direction. We are talking about this side. It will be this side. That's all. Angle. Okay. What is Sure. minus? Minus means what angle? The direction of magnetic field will get changed. Either you consider the either you consider this to be theta, okay, or you consider this to be theta. If you are considering like this angle, then your magnetic field will be like this, opposite. Minus will come means your magnetic field will get reversed. The direction will get reversed. Whenever you talk about vector I, if you turn minus I, then be what? Downward direction or not? Opposite direction. Clear? Yes, sir. So now we'll talk about the units and dimensions. What are the units? The units are what? Tesla. Tesla meter square. Why meter square? Magnetic field ka unit kya hai? Tesla. And area, we talk about B, no? B into A. Area is what? Meter square. So Tesla meter square. Clear? Yes, sir. Or Yes, sir. we say Maxwell. In CGS, it's called Maxwell, not Glenn Maxwell. Huh? Or Gauss into meter square, centimeter square. These are CGS unit. And Tesla meter square is what? SI unit. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Also Weber, 1 Weber. This is also an SI unit. Write down all this. Write down. So what is the value of 1 Weber? 1 Weber is 10 to the power 8 Maxwell. Clear? Yes, sir. And the dimension is M L2 T minus 2 A minus 1. Clear? Try to, this is a homework. Try to find out how it came. Otherwise, I will explain in the next class. Tomorrow we are having a physics class. Okay. Don't forget. So then we will study Same time. same time, 8 o'clock. We'll study about Faraday law of electromagnetism. Very, very important. Focus. Faraday law of electromagnetism. Induction. Clear? Write down. Whenever the number of magnetic field lines, whenever the magnetic field lines passes through a circuit, whenever the number of, whenever the number of magnetic field lines of force or magnetic flux
passing through a circuit changes an EMF is produced in the circuit called induced EMF. That means what? If you have a circuit, if you are, let's say you are keeping one magnet here, constant, if you are keeping the magnet stationary, the magnetic field lines will be stationary. But what you are doing, you same magnetic, but what you did, this magnet, you started shaking it. When you shook, the magnetic field lines will change or not continuously. Yes, sir. And whenever this change happens, there will be a induced EMF. Because of this change in the magnetic field lines, you will get an induced EMF. What is EMF? Voltage. Voltage. But if you don't change this magnet, if you just keep it stationary, then nothing will happen. Clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Harsh, clear? Yes, sir. The induced EMF only will be produced if you change the magnetic field line. So you can do in two ways. Either you keep the circuit constant and you hold the magnet and shake it like this. Or you keep the magnet constant and you take the circuit and put up and down, up and down, up and down. In either of the ways, the magnetic field lines passing through this circuit will change. Agree with me? We can also shake the conductor, right? That's what I'm saying. Either you shake this one, you shake this one, or you shake both. But problem, if you shake both, then if you shake both together, then also it's constant only. Understood? Or you can shake this one, this side, Depends on the speed. the close, take it apart, take it close. Anishit. Hello. हाँ भाई. हाँ क्लास में बोला. हाँ. ठीक है? Clear? Is it clear? Very, very important. Yes, Understood sir. or not? So now this is the first law. First law says what? That an induced EMF is produced whenever the magnetic field lines of force changes in a conductor or a circuit. Clear? Very simple. Write in your own words. Understanding is important. What is second law? What is second law? Second law says, I will write the mathematical formula for the second law. E equal to minus d phi by dt. That means the induced EMF is given by rate of change of magnetic flux, okay, linked with the circuit. Understood? Understood? Sir, can you explain once again? The induced EMF is equal to the rate of change of the magnetic flux with the circuit. कितना रेट में चेंज हो रहा है? अगर ये रेट ज्यादा है, if d phi by dt is more, if you are slowly you are taking the magnet, then the EMF produced will be less. If you are doing faster, it will be more. Clear? Yes, sir. But what is this minus sign says? What does this minus sign says? The magnetic sign says, the negative sign says that the induced EMF is opposite to the change of flux. Opposite to the change of flux. मतलब अगर मैं ये डायरेक्शन में करता हूं तो मेरा अगर ऐसा फ्लो होता है, जैसे ही मैं ये डायरेक्शन में आया और इधर किया, ये ऑपोजिट में आएगा. Here the flux
direction is opposite to the EMF direction. Clear? Clear? Yes. Yes, sir. We'll study. This is called Lenz's law. We'll study afterwards. Is it clear till now? Everything is clear. Yes, sir. So second law says what? That the rate of change of flux with time is equal to EMF. अगर ये क्वांटिटी जितना बड़ा होगा ये क्वांटिटी उतना बड़ा होगा. मतलब अगर आप इसको धीरे धीरे लोगे मैग्नेट को तो जितना EMF प्रोड्यूस होगा, अगर मैं इसको और भी ज्यादा लूंगा वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा. आया समझ में? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो, we will study about the next topic called Lenz's law. उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा because this require demonstration. Then I will explain you. First you look at the video. Lenz's law helps us to find आवाज आ रहा है? Are you getting हाँ volume? सर आ रहा है. हाँ, sir. the direction of the induced current in a loop when it is placed in a magnetic field which is changing. As the magnet moves towards the solenoid, this induces current in the solenoid. The induced current creates a magnetic field. The loop produces a north pole to oppose the magnetic field of the approaching north pole of the magnet. When the magnet stops moving, there is no changing magnetic field. The current in the loop is zero. Now, when the magnet is pulled away from the solenoid, there is a changing magnetic field in the loops of the solenoid. This induces current in the loop. However, this time, the loop has a south pole generated, which attracts the magnet and opposes the motion of the magnet away from the solenoid. The induced current is therefore in the opposite direction. कौन कुछ नहीं समझा बताओ? I will explain. So what is trying to say? What is trying to say? Thermally helps you work more efficiently, which makes a He is trying to say that this is called a electromagnetic what do you call that? Solenoid. Okay, solenoid having turns. Actually, the problem is no, unless you study magnetism chapter, this is no use. So you are having a magnet. Okay, so magnet will have what? Poles. These are field lines. Yes or no? Clear? Yes, sir. So this is north pole and this is south pole. So what is happening that when you are getting it close, the beauty of this thing is when you're getting it close, what happens? The more and more field lines will go into this. Understood? Okay. And what we said that it will oppose the change. Whenever you're getting it close, this solenoid will generate electricity in this direction, like this, and there is a law in physics that is called right hand screw rule. Okay, because of this, if you take your thumb like this, if your current is like in this direction, your thumb is this direction, it will generate magnetic field which will oppose this change.
Okay, and this magnetic field and this magnetic field will get opposed and it will stop. And whenever you are getting the magnet closer, but when you take the magnet away, this current will be reversed, will be in this direction. Which direction? Opposite direction. And that will create magnetic field in this direction. That means what? It is opposing the change. अगर ये पास आ रहा है ना, तो ये करंट ऐसे जनरेट करेगा, बिकॉज ऑफ विच द मैग्नेटिक फील्ड विल अपोज. अगर ये डायरेक्शन में आ रहा है, अगर ये बाहर जाएगा ना, तो ये इस डायरेक्शन में करेगा. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? दिस लेंज लॉ टॉक्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब अगर तुम मैग्नेट को ना पास में लेके आओगे, तो ईएमएफ ऐसा क्रिएट होगा जैसे उसका ऐसे क्रिएट होगा जो अपोज करेगा. अगर इसको दूर लेके जाओगे ना, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा. आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? सर वापस बताना एक बार. फिर से पढ़ा समझाता हूं. ये मेरा टर्न्स है, सोलिनॉइड है. ठीक है, सोलिनॉइड में क्या होता है मैं बता दूं. ये एक्चुअली हम लोग ना पहला चैप्टर अगर पढ़ते हैं ना, तो समझ में आता. तो अगर मैं सर आप लेंस लॉ बता रहे हो. हाँ, लेंस लॉ. एक्चुअली प्रॉब्लम है ना, हमको मैग्नेटिक चैप्टर पहले पढ़ाना है. तूने बोला था ईएमआई पढ़ाना है ना, तो मैंने स्टार्ट कर दिया. पर प्रॉब्लम है ना, बेसिक वो कॉलेज में एक्चुअली ये चालू किया पहले, तो मैं इसलिए बोला. वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, मतलब मैं पढ़ा देता हूँ, लेकिन मैं बोलता ना बाद में ना, कल से हम लोग मैग्नेटिक चैप्टर पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद ये आके पढ़ेंगे. देख कॉलेज में जो चालू होने दो, पर हम लोग बेसिक्स पे जाएंगे. ठीक है, मैं पढ़ा देता हूँ, बट मैं बताऊंगा. देखो क्या होता है, हम अगर हाथ को ऐसे रखेंगे, मेरा ये थंब है, मतलब ये मेरा है, तो थंब को ऐसे मैं कर्ल करूंगा. अगर मैं इस डायरेक्शन में कर्ल किया, तो तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड ना ऊपर जाएगा, अगर करंट ऐसा जा रहा है. ठीक है, अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना, अगर मेरा करंट ऐसा जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, देखो करंट ऐसा जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करेंगे. देखो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ. करंट मेरा नीचे की तरफ जा रहा है, आप अपना फिंगर को ऐसा रखो, कैसे, नीचे की तरफ रखो. ठीक है, तो आपका फिंगर इस डायरेक्शन में होगा. आप खुद करो, समझोगे. अभी इसको मैं उल्टा कर दिया, करंट को ऐसे कर दिया, तो आपका जो फिंगर है कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, और आपका फिंगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा. इसका मतलब क्या है, आपका जो फिंगर है, थंब है, वो बोलता है कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है. क्लियर? क्लियर? तो अभी क्या हुआ, मैग्नेट को मैं पास लाया. जब मैग्नेट को पास लाया, तो आपका जो मैग्नेटिक लाइंस वो धीरे धीरे ज्यादा होगा, अंदर की तरफ ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ज्यादा होगा, बराबर. तो मैंने क्या बोला, हाँ सर. इक्वल टू माइनस d∅/dt. मतलब तुम्हारा जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा. और अगर ऐसे होगा, तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे प्रोड्यूस होगा, जो इसको अपोज करेगा, चेंज को अपोज करेगा. अगर पास आ रहा है ना, इसको दूर भगाएगा. और अगर दूर जाएगा ना, अगर तुम वही मैग्नेट को दूर लेके जाओगे ना, उसको वो खींचेगा. आप समझ रहे हो मेरी बात? इट इज अपोज द चेंज. अगर पास आओगे, ये इसको रिपेल करेगा. अगर दूर जाओगे, ये इसको खींचेगा. दिस इज कॉल्ड लेंस लॉ. क्लियर? क्लियर और नॉट? यस सर. हाँ सर. लेंस लॉ क्या बोलता है, अपोज करना. तू अगर पास आएगा ना, मैं अपोज करूंगा. कैसे अपोज करूंगा? मेरे को पता है नॉर्थ पोल साउथ पोल अपोज करता है. अगर तू दो मैग्नेट लेगा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तू और एक मैग्नेट लेगा जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये दोनों क्या होगा, रिपेल होगा. हम पढ़ेंगे. लाइक पोल्स व्हाट, रिपेल. अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट. मतलब मैं अगर दूसरा मैग्नेट लूंगा जो साउथ पोल नॉर्थ पोल है और इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तुम देखना दो बार मैग्नेट लेना, तुम देखना एक साइड में ना दोनों रिपेल करेंगे, दूसरे साइड में दोनों अट्रैक्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर लाइक पोल हो जाएगा ना, तो दोनों रिपेल करेंगे. सिमिलरली जब तुम इसको नॉर्थ में, नॉर्थ साइड ये है और साउथ साइड ये है, तुम इसको पास लेके आए, तो ये क्या करेगा, ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा. ये सोलिनॉइड इसको रिपेल करेगा. जैसे तुम दूर लेके गए, ये नॉर्थ ये साउथ है,
इसको दूर लेके गए तो इमीडिएटली ये क्या हो जाएगा, ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा. So that is the beauty of lens law. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Very, very important. Write down the definition. The law gives the direction. The law gives the direction of induced EMF. The law gives the direction of induced EMF or current in a circuit is such as to oppose the cause that produces it. मतलब कि जिसके लिए करंट प्रोड्यूस हुआ ना, मतलब अभी देखो कैसा है, माँ ने बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, अब वही बच्चा माँ को मारेगा, उस टाइप का है. ये जो ये जो तुम्हारा जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ किसके कारण, इसके आने के कारण, और ये वही करंट को अभी रिपेल कर रहा है. यू अंडरस्टैंड गाइस? जो प्रोड्यूस किया ना, तुम उसको बोल रहे हो भाई मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, ठीक है. अगेन यू राइट डाउन, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इन अ सर्किट इज सच एज टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट. जो कॉज प्रोड्यूस कर रहा है, इसके लिए जो अपोज कर रहा है, ये उसी को अपोज कर रहा है. मतलब जो करंट आया, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आया और जो तैयार हुआ क्या ईएमएफ, वो उसको अपोज कर रहा है. अगर ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो अपोज ऐसे करेगा, अगर ये दूर भागेगा उसको खींचेगा. दैट इज द कॉल्ड लेंस लॉ. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो एक काम करते हैं, मैं ना मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैग्नेटिक चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा पढ़ते हैं, आगे जाके हम लोग ये बेसिक्स वगैरह मैग्नेट कैसे आया वैसे आया, दैट इज ओके, दैट वी कैन लीव इट. ओके, वी आर एक्चुअली कम टू द टॉपिक. ओके, आई वांट टू स्टार्ट मैग्नेटिक चैप्टर नाउ ओनली. वी विल स्टार्ट विथ ए करंट एलिमेंट. अगर मेरे पास एक करंट, ये एक वायर है, ठीक है, इट्स ए वायर थिन कंडक्टर जिसपे एक करंट जा रहा है, आई एक करंट जा रहा है, बराबर. तो मैं एक छोटा सा लेता हूँ डीएल, छोटा सा लेंथ डीएल लेता हूँ. अगर मैं बोलता हूँ एक पॉइंट पी है, अगर मुझे मेजर करना है कि ये पॉइंट के लिए ये यहाँ पर जो करंट जा रहा है छोटा सा लेंथ का डीएल के लिए करंट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, उसको बोलते हैं डीबी. ये छोटा सा डीएल के लिए ये डीबी कितना होगा, ठीक है, उसका क्या है, द डीबी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. कैसे आया मैं बताता हूं. अभी मुझे बताओ, करंट अगर बढ़ेगा, करंट देखो, करंट जितना ज्यादा होगा डीबी उतना बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा ना, स्ट्रॉन्ग, जितना ज्यादा करंट डालोगे उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा. यस और नो? Yes or no? That means your dB is dependent on I, directly proportional to the I. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. अगर मैं DL को छोटा लेता हूं, ये DL जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, मतलब dB is also directly proportional to the DL. Agree with me? But what about R square? Yes, sir. What about the distance? Distance जितना ज्यादा होगा
मैग्नेटिक फील्ड कम होगा? यस और नो? एक मैग्नेट है, तुमने एक कांटे को पास में रखा, यू टुक ए पिन हियर एंड यू टुक ए पिन हियर, which will feel the attraction more, this one or this one? This one. Why? Because it is nearby. That means the dB is inversely proportional to the distance. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. What about sin theta? अगर मेरा बॉडी इधर है, मैं अगर बोलता हूं ये मेरा करंट है, तो मेरा जो, अगर मेरा करंट ऐसा फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगा, सर्कल में होगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां रहूं, यहां हूं, तो मुझे करंट, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। अगर मैं देख, अगर मैं पॉइंट, अगर मेरा ये लाइन है, मैं इधर हूं, तो मेरे को खाली एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगा। पर अगर मैं इधर हूं और मैं इधर देख रहा हूं, तो मेरे को कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगे? ज्यादा आएंगे। मतलब साइन थीटा जितना बड़ा होगा, तुम्हारा डीबी भी बड़ा होगा। मतलब डीबी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। मतलब साइन थीटा बड़ा कब होगा? तो थीटा बड़ा होगा। बराबर? बराबर नॉट? So Yes, sir. combining, if you combine I dl sin theta r square, your dB is directly proportional to the I dl sin theta by r square. But what about the proportionality? This is called the proportionality. Mu naught by 4 pi. And what is mu naught? What is mu naught? Mu naught is called magnetic permeability. Write down. What is mu naught? Magnetic permeability. Here, magnetic permeability, and this law is called Bio-Savart's law. Bio-Savart's law. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Can you rejoin quickly?